Okay, so question number 40 ru amara karibar thila. Question number 40 with reference to the objective resolution consider the following. It was moved by Jawaharlal Nehru in 15th August 1947. It proclaimed that the power of the sovereign independent is derived from the people. It is modified version. Its modified version from the preamble of Indian Constitution. तो आ भितर कोटा करेक्ट अछि कोन हबो आंसर आर ओके तेणु आमर फास्ट जानि जे आमर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 15 अगस्त को ता पूर्व रे हेतला 2 and 3 हेजबो करेक्ट आंसर तो केबे एटा आमर अडॉप्टेड करा जायतिला और पास करा जायतिला ना आमर डिसेंबर 13 1946 रे Jawaharlal Nehru moved this historic objective resolution. Okay, not 15th August, तो ता पूर्व आम 1946 December 13 रे आमर हेतला आन तमे जानि छ जे कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर जो संविधान कहले तार पावर कोठा आसुची ना पावर डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया सो इट इज आमे सेति पे कहने वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व तो सेटा हमर कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया जो सेकंड स्टेटमेंट अछि सेटा हमर ठीक अछि ओके आ गोटे क्वेश्चन हमर थिला पर याको हमें मॉडिफाइड वर्जन होछि प्रिएम्बल हला तो जो स्टेटमेंट 3 भी हमर ठीक अछि सो इट प्रोक्लेम दैट ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया derive its power amara कोठु ना people of India तो इटा amara second statement ठीक अछि the resolution was unanimously adopted in the assembly January 22 1947 जोटा कि हम ପରେ subsequently modified version form amara preamble so part 3 ठीक अछि तो आंसर कोन हबो ना 2 and 3 amara correct answer हिजबो now question number 40 consider the following statement तो कौन हबो ना more negative liberty entitle more freedom for an individual both positive and negative liberty are not concerned with socio-politic condition of the society तो our answer only one is देखो negative liberty माने कौन negative liberty होची freedom from interference or restraint while positive liberty means freedom to do or तम ऊपर जदि किछि restraint और होची सेटा और कौन सी किए इंटरफेयर न करूची तो सेटा नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी होची हमरा सेल्फ डिटरमिनेशन फ्रीडम टू एक्ट और टू बी as one wills जहा चाहू छ तमे सेया करूछ किंतु तम ऊपर कौन सी रेस्ट्रिक्शन जोटा न रहउची सेटा होची नेगेटिव लिबर्टी सो नेगेटिव लिबर्टी इज एन एरिया in which no external authority can interfere the bigger the area non interference the more freedom is on more the jodi negative liberty तम ऊपर कौन सी restriction रहबन त मोर more freedom रहबो so statement 1 is correct while ए दीडा तक निहाती हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पय निहाती दरकार तेणु स्टेटमेंट से कोन कहै नॉट रिक्वायर्ड ओके आर नॉट कंसर्न विथ नो एटा हमको लिबर्टी हमर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पय दरकार तो एटा हमर सेकंड स्टेटमेंट हमर कौन हबो question number 42 consider the following statement with reference to fundamental right in India fundamental right so state can put reasonable restriction on the exercise of fundamental rights parliament can amend the fundamental right but cannot repeal it they are justiciable and guaranteed by the supreme court कौन हवा आंसर आर 1 and 3 2 डा भूल अछि
हमर कोन ना फास्ट जानि छे जे फंडामेंटल राइट्स जोटा कि हमर आर्टिकल 12 रु 35 अछि पार्ट 3 रे अछि एंड हमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर अछि छी आउ तमे जानि छे जे ए फंडामेंटल राइट आर गिवन टू होम सिटीजन माने को दिया जाय छी against the arbitrary action of the state तो स्टेट रो आर्बिट्ररी एक्शन अगेंस्ट रे हमर सिटीजन माने को दिया जाय छी बट तमे जानि छ जे फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसैंट फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसैंट माने कोन ना गवर्नमेंट चाहिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे परिबो तेनु state can impose reasonable restriction on the exercise of fundamental right for example ame kahiba je you can freely move to any part of the country तो जोटा कि हमर आर्टिकल 19 रे अछि किंतु reasonable restriction जो गुडा का हमर restricted area like तमरा गोटे पर्टिकुलर ट्राइब रहउ छै नॉट हैम्पर देयर कल्चर कि से मानकर सोसाइटी रे तो सेति पय हमर कोन ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमर लगा देतै सो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमें कहू छे जे हां तमर फंडामेंटल राइट रे यू कैन प्रोटेस्ट माने जो पीसफुल प्रोटेस्ट करिवो किंतु जदी कि हमरो तमे जदी वायलेंट प्रोटेस्ट करछो दैट इज हमर रेस्ट्रिक्शन लगै परिबो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखै कि हमरो रेस्ट्रिक्शन लगै परिबो तो एही होल जे स्टेट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट एटा ठीक अछि सेकंड हला पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट यस पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि बट कैन नॉट रिपील फंडामेंटल राइट जेहेतु गोटे हमर बेसिक स्ट्रक्चर त फंडामेंटल राइट को कोन करि परिबो ना तमे अमेंड करि परिबो माने चेंजेस करि परिबो ऐड करि परिबो जेमि कि हमर आर्टिकल 21 ए तटा गोटे नुवा फंडामेंटल राइट ऐड हिच ना नहीं बट कैन नॉट रिपील तेको डिस्ट्रॉय करि परिबनी जेहेतु एटा हमर कोन ना गोटे बेसिक स्ट्रक्चर रे हमर आसुची ओके फंडामेंटल राइट नेक्स्ट होची दे आर जस्टिसेबल यस फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल तमरो जदी फंडामेंटल राइट वायलेट होउची तमे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को जाई परिबो अंडर आर्टिकल 226 रे तो तमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोले से माने कोन करिवे ना रीट्स इश्यू करिवे डिफरेंट रीट्स इश्यू करिवे तो ए जो सेकंड स्टेटमेंट दिया जाईची सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि किंतु हमर आंसर रे हमें जो देइचे 1 and 2 ओनली sorry 1 and 3 only parliament can amend the fundamental right eta ठीक अछि and तमरो but cannot repeal सेरे को डिलीट करि परिबो ना ओके 1 2 3 तीनटा हमरो ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन Supreme Court or High Court upre with reference to the read jurisdiction of the Supreme Court and High Court consider the following statement Supreme Court has exclusive jurisdiction to issue writs in case of infringement of fundamental rights territorial jurisdiction of the Supreme Court or the purpose of issuing rights is wider than that of High Court देखो इथिरे हमर कोन ना स्टेटमेंट ओनली टू करेक्ट फर्स्ट कथा होची सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन एटा रो यस तमर जदी फंडामेंटल राइट तमर वायोलेशन होची तमे अंडर आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो ओके और तमे 226 रे हाई कोर्ट को जाई परिबो ना केवल एक्सक्लूसिव तमर एटा होची सुप्रीम कोर्ट करि परिबो से नहि हाई कोर्ट रो भी इथिरे हमर पावर रहुची सो जो देइची एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू द इश्यू रीड्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट नो हमें जदी हाई कोर्ट जाउछ से भी हमरा रीड्स इश्यू करि पारुची तो एटा जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दैट इज रॉन्ग आ गोटे होची टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग राइट्स इज वाइडर देन हाई एटा भी ठीक अछि देखो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन माने कोन सपोज सुप्रीम कोर्ट he can issue rights for the whole territory of India whole territory India रा total territory को हमरा कोन जदी गोटे लोकर फंडामेंटल राइट वायोलेशन होउची सी सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो को ठिकार भी हमरो को स्टेट रा भी जाई परिबो किंतु जण ओडिसा रा जणे हमरो जो आमे कहिबा ओडिसा हाई कोर्ट काहा ऊपर राजस्थान रा गोटे लोकर फंडामेंटल राइट
वायोलेशन है ओडिशा हाई कोर्ट करि परिबो नाही काहे कि ना तार टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओनली बिलोंग्स टू हमर कोठी ओडिशा को तेनु टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मच मोर देन द हाई कोर्ट काहे कि ना सुप्रीम कोर्ट पूरा टेरिटोरी ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हमर कोन होची केवल स्टेट हां सेडा ओरिजिन कारण ओडिसा रो गोटे पर्सन इज बिलोंग्स टू ओडिसा ओनली टेरिटोरियल तांकर ओरिजिन होची ओडिसा रो ताहले सेडा से करि परिबो किंतु राजस्थान जने लोक रो जो केस टाकू जो फंडामेंटल राइट वायोलेशन हमर हाई कोर्ट रे ओडिसा हाई कोर्ट रे हे परिबो नाही क्राइम स्टे राजस्थान रो गोटे पर्सन अगेंस्ट क्राइम कर से राजस्थान लोक राजस्थान हाई कोर्ट रे ही कंप्लेन करबो हां तेनु तमरो ओरिजिन आउ लिंक ए दीटा को तमरो रहथवा दरकार जदि तमरो बिल्कुल लिंक नाही कि ओरिजिन नाही ताल किछि तमे सेठी परिबो नाही आ गोटे होछि जे तमरो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट जदि वायोलेशन होउची यू कैन इश्यू राइट्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट जदि फंडामेंटल राइट तमरो वायोलेट होउची ताहाले हमर कोन होउची ना इश्यू रिट्स करि परिबा किंतु हाई कोर्ट रिट्स इश्यू करि परिबा बोथ फंडामेंटल राइट वायोलेशन हेले एज वेल एज द लीगल जदि लॉ हमर वायोलेटिव होउची सो खाली जदि तमे कहबो रीड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट खाली जदि एठी कोन पचाची रीड जुरिडिक्शन पचानी एठी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पचारीची जदि मो एठी पचारी थांती रीड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग राइट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट देन इट इज रॉन्ग एठी रीड जुरिडिक्शन पचानी एठी कोन पचारीची टेरिटोरियल जुरिडिक्शन काहार माने जुरिडिक्शन ता अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज काहार मोर तनो सुप्रीम कोर्ट रो डेफिनेटली एटा थ्रू आउट इंडिया को इंप्लीमेंट होची एटा हमरा केवल स्टेट को इंप्लीमेंट होची जदि पचरा हेथांता रीड्स इश्यू करिवारे सुप्रीम कोर्ट केवल रीड्स इश्यू करे केते बेले ना जतबे हमर फंडामेंटल राइट सो सुप्रीम कोर्ट इश्यू रीड्स इन केस ऑफ केवल हमर फंडामेंटल राइट वायोलेट हेले हमर रीड्स इश्यू करिवो किंतु वेयर एज हाई कोर्ट हमर कोन करिवो ना फंडामेंटल राइट जदि वायोलेशन होची प्लस ऑर्डिनरी लॉ जदि भी जो वायोलेट होची दीटा का केस रे कहबो सो रीड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज मच मोर देन सुप्रीम कोर्ट but territorial jurisdiction of the supreme court is much more wider than the high court okay तो सेटा तमरा लेखा है जे तमर जदि फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची अंडर आर्टिकल ले तमे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो और अंडर आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट को जाई परिबो आज पर 32 रे सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सेंस the aggrieved person directly go to supreme court not necessarily by the way of appeal through in way तमर जदि फंडामेंटल राइट वायोलेशन होची डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट बाय द वे ऑफ अपील किंतु हाई कोर्ट केस रे हमर कोन कहउचे आल्सो एम्पावर्ड टू इश्यू रिट्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट सो thus रीड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंकरेंट विथ द रीड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट भी रीड जुरिडिक्शन करि परिबो हाई कोर्ट भी करि परिबो सो दिजन जगर पावर अछि द ओनली डिफरेंस होची रीड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट जोठी हाई कोर्ट रो इश्यू रिट्स इश्यू करिवो जदि वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज एनी अदर पर्पस पई तो अदर पर्पस पई भी करि परिबो सेति पई हमें कहूचे रीड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज मच मोर वाइडर देन द रीड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किंतु टेरिटोरियली वाइज जदि देखिबो हमर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जो पर्सन थ्रू आउट द टेरिटोरी किंतु हाई कोर्ट केवल से स्टेट रो लोक मानो पई करि परिबो ओके गुड रीड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाइडर देन सुप्रीम हां सेडा हमर एडी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पचातला हेडा यदि रीड पता रही तांदा ताले ठीक है ओके रीड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज मच मोर वाइडर देन द okay next question hochi consider the following statement with reference to directive principle of state policy directive principle of state policy ko nei ki they declare political democracy to be ultimate goal of Indian polity the constitutional classify them as socialist Gandhian and liberal intellectual they resembles the instrument of instruction given in the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 कौन हवा आंसर ओनली 3 हवा हमारा आंसर ओके ओके तो एमाने होछंदी कोन ना तमरो फास्ट देखो रॉन्ग अछि जे हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर केते नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 4 रे अछि 36 रु 51 अछि कोड आसीछि ना आयरलैंड रो हमर आसीछि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसीछि दे आर फॉर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ओके गवर्नेंस ऑफ द कंट्री रहउछि तापर हमर कोन वेलफेयर स्टेट कथा कहउछि वेलफेयर स्टेट कथा कहउछि एंड एटा होछि कोन प्रमोट करूछि ना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा कहउछि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा कहउछि ओके तो फास्ट जो हमर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कथा की कहउछि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एटा हमर फंडामेंटल राइट हुए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कथा एंड डीपीएसपी कहे हमर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एई जो हमरा कहूचे लिबरल इंटेलेक्चुअल गांधीयन एटा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे क्लासिफाई है बट इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई याकू करेनी ओके सो एटा को हमें कोन ना सोशलिस्टिक गांधीयन आउ लिबरल इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन एटा हमरा मेंशन नाही एंड तमे जानि छ दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द governor and governor general during British time in the government of India act रे मेंशन government of India act रे जो इंस्ट्रक्शन दिया उतला हमरो गवर्नर जनरल को जे को वे रे तमे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करिवो दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए लेटर अडॉप्टेड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल भी तमे जानि छ ओके एटा जस्टिसेबल नुहे ओके नॉन जस्टिसेबल एटा हमर तेनु आंसर कोन हबो ना ओनली 3 एटा भी हमर रॉन्ग अछि ओके तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर हमें कहिले 36 रु 51 एटा हमर आयरलैंड रु आनी छे एंड दिस आर द नोवेल फीचर हमें कहिले एंड यूजुअली हमर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नाही ओके constitution itself does not classify DPSP but they are usually classified into 3 category socialistic Gandhian और liberal intellectual बोले हमें कहिले आर गोल हमरा कोन ना इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड हमें जानि छ दिस आर नॉट जस्टिसेबल बोले भी जानि छ ओके सो आंसर केवल 3 टा हमरा हेजबो नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following are the feature of the parliamentary government in India? The ministers are collectively responsible to the parliament in general and Lok Sabha in particular. All the members of the council belongs to the same political party. Ministers are the member of both legislature and executive. There are strict separation of power between the executive and legislature. Code amra. ओके तो करेक्ट आंसर कोन हो 1 and 3 हे जिवो देखो हमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एथिरा हमर कहउछ कोन ना मेजॉरिटी पार्टी रूल्स जो पार्टी रो लोकसभा रे मेजॉरिटी आसीबो तो सी हमर गवर्नमेंट रहिबो as long as they have the number in the लोकसभा 272 टा सीट जदी तांग पाखे अछि they will be in the power जदी the mane minute they lose the confidence of the house or they don't have the number in the Lok Sabha 272 ta seat nahi tale no confidence motion tanko against re pass hobo and they will government tankara bhangi jibo so minister are collectively responsible to the parliament and Lok Sabha in particular tenu Lok Sabha ku they are responsible to the Lok Sabha so as long as they have the number in the Lok Sabha they will be in power the first statement ठीक अछि all the members of the minister belong to the same political party देखो
सेटा ठीक नुहे कहीं ना जदि तुम कोलिशन गवर्नमेंट करिछ कोलिशन गवर्नमेंट रे सपोज तमर जमी कांग्रेस समय है मनमोहन सिंह सरकार रे हमर अदर मेंबर भी थिले जाई के हमर डीएमके पार्टी रो हमर थिले तमर जो हाँ टीएमसी भी हमर थिले तो सिमिलरली इवन इफ हमर ए पार्टी रे भी हमर कोन थिले ना अलगा जेमति की फूड फूड आउ हमर डिस्ट्रीब्यूशन रो हमर थिले जो बिहार रामविलास पासवान सी गोटे डिफरेंट पार्टी अकाली दल रो हमर थिले तो all the member of the council belongs to same political party may not be correct कहीं ना हेई पारंती न हेई भी पारंती अन्य पार्टी रो जदी कोलिशन गवर्नमेंट अछि से माने आसी पारंती द मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ओके यस जे मिनिस्टर होउछंती से माने फॉर्मुलेशन तो करूछंती आज एग्जीक्यूटिव इवन इफ गोटे बिल टे पास होला बेले से माने वोट देई परछन सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर so minister are the member of both legislature and the executive एटा हमर ठीक अछि जे भी मिनिस्टर हबो जतले सपोज हमर नारी शक्ति वंदना बिल आसला 106 अमेंडमेंट एक्ट रे तो सेठी मिनिस्टर माने भी वोट देबे ओके सो मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ बोथ executive and legislature there is a strict separation between the executive and the legislature okay the strict separation of the power between executive and legislature तो एटा हमरा ना हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो द स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट जदि हमारा जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव दिया था ताहले हमरा किंतु एग्जीक्यूटिव आ लेजिस्लेटर may not be correct जदि it is strict separation between हमारा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी और लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी सेमान को भितर हमारा कोन अछि ना strict separation अछि किंतु जणे जे लेजिस्लेचर सीए भी हमारा एग्जीक्यूटिव हे परिबो तो कि नहीं जणे मिनिस्टर जे से भी लॉ थियरी रे रहउछि तो देयर इज नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन तो एटा हमारा जुडिशियरी और लेजिस्लेचर भितर रहिबा कथा ओके तो सेति पे हमर चारिटा रंग अछि तो हमारा जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सब बेले परीक्षा रे पडुछि तमे मन रखिबा कोन कोन हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो इंपोर्टेंट टीचर हमारा नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हु इज अ नॉमिनल हेड हमें कहउछे प्रेसिडेंट हे गले नॉमिनल हेड और डी जियोर बोली हमें कहउछे एग्जीक्यूटिव और टिटुलर और हमारा सेरेमोनियल हेड बोली हमें कहउछे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव डी जियोर और टिटुलर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हे गले हमारा नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव पे के हमारा रहउछनी ना प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोली हमें ताको कहउछे मेजॉरिटी पार्टी रूल मु तुमको कहली जे जो पार्टी रा मेजॉरिटी अछि हमारा कोठी लोकसभा रे तो सेही पार्टी हमारा कोन गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिवो सो सेकंड हला मेजॉरिटी पार्टी रूल्स द पॉलिटिकल पार्टी विथ सेक्युलर मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट second collectively responsible the minister are collectively responsible to parliament in general and lok sabha in particular okay so जो पर्यंत आर्टिकल 75 रे लिखा है जे जो पर्यंत you have the number in the lok sabha you will be in the power next होची political hegemony generally हमारा जो member of the council and minister belong to same party but not necessary कि all the minister belongs to same party हमारा अलग पार्टी रे जो coalition government रहिले चलिबो okay जदि तुम कोलिशन गवर्नमेंट करू चाहो से माने कहिबे जे हमकु किछि मिनिस्टर पद दियो त तुमको दबाक बाध्य हो ओके ओके सो जुडिशियल पावर हमरा जुडिशियल आउ हमरा एग्जीक्यूटिव टाको हमरा और लेजिस्लेचर सेटा को हमरा डिवाइड सेपरेशन अछि नॉट एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेचर भितरे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तमे कहिबो जे जो जो उडा का हेछि तार क्रोनोलॉजिकली तमे ताको सजेइबो हमारा नेशनल एंथम केबे होला एटा हमारा अच्छा अच्छा ओके एटा हमारा 2 जुलाई 22 जुलाई
1947 रे आसीबो नेशनल एंथम हमर 24 जनवरी 1950 रे आसीबो सिमिलर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी ओके सो नेशनल सॉन्ग कोडा हमर नेशनल सॉन्ग कोडा वंदे मातरम ओके नेशनल एंथम होची जनगण मन ओके तो ए दीटा का हमर सेम डेट रही छी 26 जनवरी 1950 रे ओके तो सेति भाई हमर कोन हबो ना आग 3 आसीबो तापरे ड्राफ्टिंग कमिटी आसीबो तापरे हमर एइटा हबो कोडा ना 3 4 1 2 बी हेजबो हमर करेक्ट आंसर ओके आग एथिरे मु डेट उडा का कहि दोछि मने रखिबाटा परीक्षा रे तमरो एमती गोटे गोटे पड़ी जाउछि तो नेशनल फ्लैग केबे अडॉप्टेड हैला ना जुलाई 22 1947 ओके जुलाई 22 1947 ने कॉमनवेल्थ इंडिया ratified the membership of commonwealth nation May 1949 and it is 1949 ने commonwealth national anthem हमरो 24th January 1950 रे similarly तमरो national song भी हमरो मन रखिबो सेम डेट रे कारण किछि भी पढ़ी पारे या भितरु नेशनल सॉन्ग भी जनवरी 24 1950 राजेंद्र प्रसाद as the first president of India हेले सेम डेट रे नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 1950 ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप करा गला अगस्त 1947 सेति पई हमरो प्रथमे हमें कोन कहले जे नेशनल फ्लैग जुलाई तापरे अगस्त रे हला तापरे हमरो कॉमनवेल्थ नेशन तापरे नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम आउ हमरो प्रेसिडेंट हमरो जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट हमें कहले आर्टिकल 12 रे डेफिनेशन ऑफ स्टेट अछि त कोउडा हमर डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे आसीबो ओके तो कोन हबा हमर करेक्ट आंसर 1 2 3 तो तीनटा का हमर डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे आसीबो स्टेट माने कोन ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज हला गवर्नमेंट अथॉरिटी हला एग्जीक्यूटिव माने हले समस्त एनीवन जो माने पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट से माने हमर स्टेट रे आसीबो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जोडा कि हमर आर्टिकल 12 रे लिखा आइछि फंडामेंटल लाइन सो अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जोटा गवर्नमेंट रो बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट रो बॉडी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जतक पब्लिक सेक्टर कंपनी भी रहिला दे आर अंडर कमिंग अंडर द स्टेट सो हमर 1 2 3 यूनाइटेड नेशन एडा हमर जेहेतु एडा हमर स्टेट रो नुहे ओके गवर्नमेंट रो एथिरा हमर कोन पूरा जो वर्ल्ड लेवल को पळौचे सो एडा हमर नुहे सो यूनाइटेड नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ हमर स्टेट रो डेफिनेशन है आसुनी सो आर्टिकल 12 ऑफ हमर फंडामेंटल राइट ये कौन करछि ना डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज डिफाइंड ए वाइडर सेंस तो इथरे इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट एजेंसी रहिले एग्जीक्यूटिव ए माने रहिले आ जदी हमर कोन ना स्टेट एमिति किछि लॉ नै कि आसुची जोटा कि तमर फंडामेंटल राइट रो अगेंस्ट रे तो सेटा को हमें कोन करबा नॉल एंड भॉइड कर दबा जोटा कि जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल लिखा है इफ एनी लॉ जोटा कि ब्रिंग बाय द स्टेट इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स or it is against the constitution then it will become null and void okay judicial review power use करके एटा करि परिबो okay next question 48 with reference to preamble to the constitution of India consider the following statement it is mentioned the date of adoption it is enacted by the constituent assembly before the constitution was enacted neither source of power nor a prohibition upon the power of the legislature okay okay डेट ऑफ अडॉप्शन एटा हमर केबे अडॉप्टेड करा जायतिला 26 नवंबर 1949 ने तो डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन अछि नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एटा भी हमर ठीक अछि ओके इट वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड नो एटा हमर सब दिन हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हि सला पारे तार समरी टा कोन
सेटा हमर प्रिएम्बल लिखा है सेति पे हमें कहउछे इट इज समरी और एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें कहउछे सो सेति पई एटा हमर कोन होची सेकंड टा स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि ओके तो आंसर 1 and 3 होई जिवो आउ एथिरे हमें देखिले जे प्रिएम्बल जो रहिला चारिटा इंपोर्टेंट थिंग the source of authority of the preamble code जो constitution the source of authority को किए ना people of India so constitution derive its power and authority from जो derive its power from the people of India nature of the Indian state को भले हमर Indian state रहबा दरकार sovereign socialistic secular democratic and republic so declare India to be गोटे sovereign हेतिबो socialistic हेतिबो secular democratic और republic country हेतिबो objective हेतिरा कोन ना ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची प्रोवाइड करबो लोक माने कोन प्रोवाइड करबो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ओके चारिटा एक जे जस्टिस हमर कोन थाय ना एडै पडितला जस्टिस होची पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस ओके लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ एंड एक्सप्रेशन फेथ और वर्शिप ओके तो एडा हमर जे ऑब्जेक्टिव कोन और डेट ऑफ अडॉप्शन हला हमर कोन ना नवंबर 26 1949 ओके तो एडा हमर होची question number 49 with reference to state and government which one of the following statement is correct government ro definition kono na this is the government ro definition eta hochi government is an agency of the states through which collective will is formulated expressed and executed तमरो जेमिति के हमें कहिले गोटे गवर्नमेंट रे हमें कोन कले ना हमें इलेक्टेड करी की पठौछे जो माने मेजॉरिटी लोक जहा को वोट देले से जितिला आउ से माने मेजॉरिटी जो जहा पाखे नंबर अछि से माने गले आम पई लॉ तयारी करछन से माने जो लॉ तयारी करूछंदी हमें ताको पावर देइछे बोली से माने लॉ तयारी करछंदी हमें ताको वोट देई की पठैछे बोली गोटे कलेक्टिवली हमर वोट ताको देइछे दैट मींस वी आर गिविंग आवर consent to these people जे हम तरफ रु जाओ आमे हमरो तमे रिप्रेजेंटेटिव हम पई तमे लॉ तयारी करा सो गवर्नमेंट इज ए एजेंसी गवर्नमेंट माने हमें कोन कहिबा गोटे हमें कहला जे पर्टिकुलरली गोटे स्टेट रो पार्ट ये जे कि कलेक्टिवली विल इज फॉर्मुलेटेड एक्सप्रेस एंड एग्जीक्यूटेड तो स्टेट हमें काहा को कहिबा स्टेट हमें कहिबा जे ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग और पॉपुलेशन जार गोटे टेरिटरी थिबो जेमति कहबा इंडिया गोटे इंडिया रो बाउंड्री अछि किछि लोक अछंती एंड आमे कहूचे जे हमरो को भलिया नेचर आमे सोवरेन कंट्री बोली कहूचे स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल ओके स्टेट ता होची कोन ना बोथ फिजिकल एंड मेटिक फिजिकल माने कोन ना हमर लोक इथिरे रहउछंती हमर ओटे बाउंड्री अछि तो टेरिटरी अपन व्हिच परमानेंटली रिसाइडेड टेरिटरी रहइबो एंड इंटरनल सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल आमे कहले गोटे इंटरनल आमे फॉरेन कंट्री हम ऊपर कोनोसी दबदबा पकई परिबेन वी आर टोटली इंडिपेंडेंट बोली हमें कहूचे तो एडा होची स्टेट ओके एंड गवर्नमेंट होची कोन ना स्टेट रो पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्टेट बट ओनली थिंग होची तांकर से कोन करूछंदी ना रिगार्डेड रिसेंटली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन वेयर गवर्नमेंट इज वेरी ओल्ड गवर्नमेंट हमें कोन कहूचे ना एथिरे दे आर हमें कहिले डेफिनेशन हमें कहिले government is only an agency of the state through which the collective will is formulated expressed and executed okay next question number 50 101st amendment act एटा तमरा OPSC रे 2-3 थरा पढितला एटा फर्स्ट ठीक अछि ना भूल अछि 101 constitutional amendment act एटा केते नंबर बिल रे इंट्रोड्यूस हेतला बिल नंबर 122 ओके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नंबर 122 अमेंडमेंट होची 101 जोटा कि हमरा जीएसटी बिल पास हेतला गोटे थरा पडला 100 जो हमरा जीएसटी ता केते नंबर अमेंडमेंट बिल रे इंट्रोड्यूस हेतला 122 गोटे थरा पडला केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे इंट्रोड्यूस हेतला आ गोटे थरा पडला केबे इंट्रोड्यूस हेतला तीनी थरा ई क्वेश्चन हमरा ओपीएससी रे पडिची ओके सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट 2016 रे जोटा कि 100 फास्ट अमेंडमेंट एक्ट और बिल भीतर तमे डिफरेंस जानिछ जेतले इंट्रोड्यूस ए बिल जेतले माने बोथ हाउस रे पास है कि प्रेसिडेंट कर असेंट मिले सेटा होची हमरा एक्ट है सो 100 फास्ट अमेंडमेंट एक्ट रे हमरा एटा जीएसटी इंट्रोड्यूस हेतला 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और एनजेएससी हमें कहितले एटा ठीक अछि ना भूल अछि एटा भूल अछि एटा 100 नो एटा केते नंबर 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 रे ओके तो एथि पय ए स्टेटमेंट हमरा रॉन्ग अछि ओके 100 नंबर अमेंडमेंट एक्ट कोन थिला Land boundary agreement of Bangladesh. वेरी गुड ओके तो हमर जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होतला किछि पार्ट हमें बांग्लादेश को देले बांग्लादेश रु किछि पार्ट आनले 100 अमेंडमेंट एक्ट होछि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ओके तेणु आ भीतर इंडिया बांग्लादेश भीतर जो लैंड बाउंड्री एक्सचेंज हेतला हमें तांकर किछि पार्ट हमर से किछि पार्ट देथिले तो एटा 100 अमेंडमेंट एक्ट हेतला 100 सेकंड एटा ठीक अछि ना भूल अछि केते नंबर अमेंडमेंट बिल हबा ये ना 123 हला 123 नंबर अमेंडमेंट बिल 100 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट तो जोटा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला काहा को नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी बोली हमें कहछे ओके तापरे 104th अमेंडमेंट एक्ट extension of the reservation of the scheduled caste in the Rajya Sabha for 10 years okay 104th का कौन थिला हमरो एंग्लो इंडियन माने को भी हमरा कोन करा गला ना पूरा अबोलिश करा हे गला तांकु जो रिजर्वेशन दिया होतला सेटा हमरो अबोलिश करा गला ओके तो एटा हमरो भूल अछि ओके 100 अच्छा 105 टा कोन अमेंडमेंट एक्ट 105 एनीवन नो वेरी गुड ओके तो 105 होची स्टेट को कुआ जो दे विल डिसाइडेड कि को ग्रुप माने हमर ओबीसी रे इंक्लूड हेबे सो स्टेट विल डिसाइड द पीपल हु कैन इंक्लूड इन द ओबीसी तो एटा 105 और लाटेस्ट 106 कोन 33% रिजर्वेशन दिया जिवो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे हमरा दिया जिवो ओके तो तमरा सबु वर्ष गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पड़े तो ए एटलीस्ट 100 रु 106 यू हैव टू रिमेंबर ओके हमें आउ गोटे छले 103 टा कोन परीक्षा रे ओपीएससी रे पड़ीतला 103 टा होछ हमरा कोन EWS 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माने को रहले ओके तेनु आउ थरे देखि दियो 100 होची जीएसटी 101 ओके 101 होची जीएसटी ओके 100 होची हमर कोन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तापरे 102 होची हमर कोन एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को 103 हला EWS जो थरे कि हमर 10% रिजर्वेशन दिया होची 104 हला हमर कोन ना हमर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया होतला अबोलिश करा गला 105 हला हमर स्टेट को कहै जायछि टू डिसाइड द पीपल कैन इंक्लूड इन द एससीबीसी एंड हमर 106 होची वुमेन रिजर्वेशन 100 रु 106 मन रखिबा डेफिनेटली हमर प्रीलिम रे सब वर्ष देखि दियो गोटे क्वेश्चन दा भीतर पडुछ ओके 51 नंबर The Indian political system is often referred as federal with unitary bias. Which one of the following feature reflect the unitary bias in the Indian federal system? The Indian federal system रे कोडा unitary bias रे हमरो आसुचे. दुई दिन चारि ओके सिंगल सिटीजनशिप जदी हमरो फेडरल स्ट्रक्चर रहउची तो स्टेट रो जदी गोटे सिटीजनशिप थांता सेंटर रो गोटे सिटीजनशिप थांता सेटा हमें कहले फेडरल स्ट्रक्चर
सेथिबाई यूनिटरी माने कोन गोटिया ही हमर दिया छै सिंगल सिटीजनशिप इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी माने हमर सीएजी जो रहउची कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल तो सीए सेंटर भी ऑडिट करूची स्टेट रो फंड भी ऑडिट करूची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ओडिशा जो हमें ओडिशा कोचे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट हैला पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ द स्टेट तो स्टेट रो अकाउंट गुडा को ऑडिट करूची तेनु आ पई सेपरेट ता पई नहीं तो गोटे यूनिटरी बायस ही जाउची इमरजेंसी प्रोविजन जतले लागू हुए तो टोटल सेंटर स्टेट ऊपर हमर लॉ तयारी करबो तो ए दी जार हमर जो कोन होची ना यूनिटरी फीचर्स हमर होची डुअल आमे जदी कहि थांते हमर फेडरल स्ट्रक्चर रहिला डुअल सिटीजनशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दीज आर फेडरल स्ट्रक्चर ओके तेणु हमर आंसर कोन ना 2 3 4 हि तो इंडिया रो हमर जो आमे कहिले कॉन्स्टिट्यूशन हमर फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी बायस हमर रहउची ओके तो एडा मन रखियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर्ड एज फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस जदी हमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रहिला 7 शेड्यूल रहिला एडा हमर कोन रहउची ना फेडरल नेचर किंतु यूनिटरी बायस कोन ना सिंगल सिटीजनशिप सेंटर और स्टेट पई हमर कोन ना गोटिए ही सिटीजनशिप तमरो यूएस रे कोन होची तमरो स्टेट पई गोटे सेंटर पई गोटे तो एडा हमर होची फर्स्ट होची सिंगल सिटीजनशिप रहउची सेकंड इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी हमें सीएजी कहउचे बोथ सेंटर और स्टेट पई गोटे ओके तो एडा भी हमरा यूनिटरी रहला सेकंड हमरा इमरजेंसी प्रोविजन बेले हमरा सबुतक पावर सेंटर हाथ को पळउची सेंटर कैन मेक लॉ तापर हमरा कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट तो राज्यसभा को हमरा सब स्टेट रु हमरा जाउछन कि बट नॉट यूनिफॉर्म तमे यूएस रे देखिबो 50 टा सपोज हमर स्टेट रहिले प्रति स्टेट रु 2 टा लाखे टोटल 100 टा सीट हमर राज्यसभा अछि हमर कोन ना उत्तर प्रदेश रु जदी हाईएस्ट रहउची तो को स्टेट रु हमर बिल्कुल नाही ओके तो एडा हमर कोन होची ना यूनिफॉर्मली हमर कोन होची ना सीट राज्यसभा को हमर रिप्रेजेंट होनी सो इंटरस्टेट काउंसिल कथा तमे कहबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटरस्टेट काउंसिल it is a constitutional body set up by President of India. It presided by the Union Home Minister of India, established in 1990, is based on recommendation of Sarkaria Commission. आउ ए क्वेश्चन दा सरकारिया कमिशन एथरा मेन रा पडितला 20 40 मार्क रा क्वेश्चन पडितला प्रथमे होची मने रखिबो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबु स्टेट भितरे रिलेशन पई हमर गोटे इंटरस्टेट काउंसिल रहउची आ एटा को किए अपॉइंट करंती ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप बाय प्रेसिडेंट आ एटा किए प्रिसाइडेड करंती प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करंती ओके ओमास रे भी परीक्षा रे पडितला मने रखिबो ए जो इंटरस्टेट काउंसिल नॉट बाय होम मिनिस्टर ए हमर किए ना प्राइम मिनिस्टर यार चेयरमैन होती सब स्टेट रो हमर चीफ मिनिस्टर रहिबे प्राइम मिनिस्टर रहिबे यूनियन टेरिटरी दिल्ली पांडिचेरी जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर रहिबे जोठी यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर नाहंती तांकर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिबे जो स्टेट गुडा को इमरजेंसी सिचुएशन अछि तो सेठी तो चीफ मिनिस्टर नै सेही केस रे हमर गवर्नर अछि तो एटा तमे मन रख थर्ड भी हमर ठीक अछि इट इज बेस्ड ऑन हमर सरकारिया कमिशन So 1 and 3 is our correct answer. Okay. So article एटा केतरे इंटरस्टेट काउंसिल कोठी लिखा है ना आर्टिकल 263 रे. So 263 of the Indian Constitution provide the interstate council कौन भाई to effect coordination between the states और center और state भितर coordination पाए. Okay. तो ये interstate council रे president has the power to establish such council. तापरे आर चेयर की करंती ना प्राइम मिनिस्टर होछन यार एटा हमर प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओके ता संगे इथरा आउ को माने थांदी अदर मेंबर हेले चीफ मिनिस्टर
of all state रहिले union territory chief minister जोठी legislative assembly अछि Pondicherry Jammu and Kashmir lieutenant governor of the union territory governor जोठी हमर president rule लागू होईची 6 जण सेंट्रल मिनिस्टर अछंती तो एटा हमर सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन आसीथिला जेटा कि सेंटर स्टेट रिलेशन 1983 रू 88 भितरे so made a strong case for establishment of permanent interstate council under article 263 okay question number 53 consider the following statement with reference to cultural and educational rights provided in the constitution of India. Huh? Okay, the answer kono now only two hejiba. It provide right to conserve language and culture only to minorities. Okay, only to laga haichi even if konosi section ro jodi semane tankara eta gote distinctive culture rohuchi language rohuchi they can protect. Minorities माने plus majority भी माने करी परिबे धर ओडे हमर कोन होची ओडे लैंग्वेज ता ओडे आर्ट ता हमर होची ऑलरेडी वेरी हमर स्पेशल आर्ट तार तमे कोन करि परिबो कंजर्व करि परिबो तो एडा आर्टिकल 29 और 30 ता तो तमे जानि छ जे ओनली माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ठीक अछि आर्टिकल 29 प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन not only minority any section of the citizen residing any part of the India having a distinct language script culture of its own shall have the right to conserve the same so any section of the society so article 29 grant protection to both religious minorities as well as the linguistic minority theta the Supreme Court held that the scope of this article not necessarily restricted to minorities only, as it is commonly assumed to be. Majority mane bhi eithire asuchandi. So this is because the use of the word section of the citizen, any section of the citizen, the article जोड़ा के include minority as well as majority. सेतिबाई हमरा one टा correct no. The term minority has not been defined anywhere in the constitution. So article 30 रे होची all the minorities shall have the right to establish administer educational institution of their choice. Okay. तो एटा हमरा second statement टा ठीक अछि. It is ruled by a small and dominant group of the people or elites who are characterized by their wealth and education. Currently, there is no such government which can be categorized this type of government. को type of government जो थे few लोग थिबे rich है थिबे health माने wealthy है थिबे and educated है थिबे. तमार जेमती की एटा को हमारा aristocracy गवर्नमेंट कहूचे जेमती कि हमें माने पकाओ इंडियन नेशनल कांग्रेस रे जेतेबेले प्रथमे जो माने मॉडरेट ग्रुप थिले से माने अरिस्टोक्रेट फैमिली रो बिलोंग करथिले रिच हेथिबे और एजुकेटेड एलाइट क्लास रो हेथिबे ओके लंडन रे लॉ पढी के आस्थिबे से बढिया लोक एथिरे कॉमन लोकन को इंक्लूड करा जाउ नथिला त एटा हमरो अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट कथा हमें कहूचे सो अरिस्टोक्रेसी माने कोन ना the rule by a small group of people or elites who called aristocrat dominant group of people in the society they are characterized by their wealth education either se mane rich heithibe or very educated heithibe se mane aristocrat re asune monarchy mane tame jani che king or queen session hereditary amara rule rahuchi tapre autocracy mane kono na dictatorship type ra amara hitler type ra jemti ame कहउतले dictatorship type of the government where ruling is done by a single self-appointed ruler or number of self-appointed ruler. A autocracy type of government India रे जो world रे तमे कोठी देखियो North Korea. Okay, North Korea रो तांकर हमरा autocracy type रो okay आ democracy तो तमे जानि छ people माने elected करिकि पठौ छथि इंडिया ओटे democratic country बोली हमें कहू छै okay next question
रशिया ओके रशिया भी ठीक अच्छे देवव्रत ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमें आउ कोन कहथले मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमें मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म बोली कहथले एथिरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमर कोन थिला डायरकी ए डायरकी हमर कोन ना प्रोविंस रे दीटा सब्जेक्ट डायरकी इन प्रोविंस थिला माने प्रोविंस रा सब्जेक्ट गुडा को दी भाग रे डिवाइड कराइतला गोटे हमर कोन थिला ट्रांसफर सब्जेक्ट आउट हमर कोन थिला रिजर्व सब्जेक्ट ओके ए क्वेश्चन टा पडितला यूपीएससी प्रीलिम लास्ट टू लास्ट ईयर रे पडितला जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ता हमर कोउथिरे आसुतला रिजर्व सब्जेक्ट ना ट्रांसफर सब्जेक्ट माने रखिबो हां जेमति कि हमें कहले लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस रहिला रेवेन्यू रहिला एडा रिजर्व सब्जेक्ट रे सो रिजर्व सब्जेक्ट उडा किए करथला ना वाइस रॉय और गवर्नर आउ तांकर काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहथले एडा हमर कोन ना जो काउंसिलर मिनिस्टर रिस्पांसिबल लेजिस्लेचर रहथले जो जेमति कि हमें इथरे कहले पंचायत राज रह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत राज रहिला ओके एजुकेशन हेल्थ एगुडा का हमरा आसीबो कोथरे ना ट्रांसफर सब्जेक्ट रे सो मॉन्टेगु चेल्सफॉर्ड रिफॉर्म और तमे कहउछ एटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो ए जो क्वेश्चन अछि जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमर ट्रांसफर सब्जेक्ट रे थिला यस पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी हमर एटा होछि जोडा ट्रांसफर सब्जेक्ट थिला क्वेश्चन पडितला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 reverse the decentralization trend by prohibiting formation of local no ओके तो मोर हमर डिसेंट्रलाइज हेतला हमर सब्जेक्ट गुडा को तीन भाग रे डिवाइड हेतला तबे जानिछ माने हमर से जो फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट तो पावर टा को डिसेंट्रलाइज मोर करा जेतला ताको सेंट्रलाइज करा जे नतला तो एटा हमर रॉन्ग ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आउ इंपोर्टेंट पॉइंट कोन थिला आरबीआई हमर गठन कराइतला यूपीएससी ओके फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन आउ डायर किटा हटै दिया जिवो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना नहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जिवो आउ कोन फेडरल कोर्ट हमर कोहाला जोटा कि सुप्रीम कोर्ट जाई के हबो ओके फेडरल कोर्ट हला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हला सब्जेक्ट गुडा को ऑल इंडिया फेडरेशन कथा कहितले इथरे सो ऑल इंडिया फेडरेशन जो थरे कि प्रिंसली स्टेट रहइबो प्रोविंस रहइबो किंतु एटा केबे आसीबनी काहे ना प्रिंसली स्टेट माने राजी हेबेनी तापरे हमर कोन डायरकीटा हमर हटै के में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डायरकीटा कोड इंट्रोड्यूस हबो सेंटर रे डायरकी इंट्रोड्यूस हबो सेंटर रे डायरकी ओके डायरकी बाइकैमरल लेजिस्लेचर कोड हबो बाइकैमरल हमर प्रोविंस रे इंट्रोड्यूस हो सो बाइकैमरल प्रोविंस रे बाइकैमरल ओके बाइकैमरल ओके इन प्रोविंस आउ कोन हमर हमर रिजर्व रहबा डिप्रेस क्लास हो मेन माने रिजर्वेशन दिया जिवो डिप्रेस क्लास हो मेन ओके तो एडा हमर होछि कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे हमर हेतला ओके क्वेश्चन नंबर 56 consider the following statement सबुडा ठीक अछि क्लासिकल लैंग्वेज जोडा से ओरिजिनल कोडू बोरोड हे नथिबो ओके तमिल होछि फास्ट लैंग्वेज अच्छा ओडिया भी गोटे हमर क्लासिकल लैंग्वेज ना नहीं केबे हमर अडॉप्टेड करा गला 2014 रे ओके आउ जेतक क्लासिकल लैंग्वेज सबुडा हमर 8 शेड्यूल अछि 8 शेड्यूल हमर केतडा अछि 22 टा एबे क्वी लैंग्वेज कथा में कहउतले क्वी को भी हमें कोन करछे शेड्यूल 8 रे ऐड करिया पे कहउछे त तीनटा का स्टेटमेंट हमर ठीक अछि सो गवर्नमेंट ऑफ 2004 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड ए न्यू कैटेगरी कॉल्ड क्लासिकल लैंग्वेज तो क्लासिकल लैंग्वेज पई हमर कोन ना
मिनिमम 1500 रु 2000 इयर्स हेथिबो एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट थिबो तार ओरिजिनल हेथिबो कोठु कॉपी हे नथिबो ओके एंड एटा होची कोन ना द लिटरेरी ट्रेडिशन इज ओरिजिनल नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी द क्लासिकल लैंग्वेज जो हमें कहले ना एटा हमर फास्ट लैंग्वेज जोटा क्लासिकल दिया गला तमिल लैंग्वेज को 2004 तापरे करेंटली हमर 6 तमिल 2004 रे संस्कृत को 2005 रे कन्नड़ा 2008 रे तेलुगु भी 2008 रे मलयालम 2013 रे ओडिया 2014 रे हमरा ऐड कराला आ ए सब तक देखिबो जेति कि हमर 6 टा क्लासिकल लैंग्वेज हमर जो शेड्यूल 8 रे जो हमरा कोन अछि जो 22 टा अछि शेड्यूल लैंग्वेज सब गुडा हमर अछि तो शेड्यूल 8 रे को लैंग्वेज गुडा अछि हमें जानिले जो गुडा को शेड्यूल 8 रे हमरा अछि बेंगली गुजराती हिंदी कन्नड़ा कश्मीरी कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत सिंध तमिल तेलुगु उर्दू बोडो संथाली मैथिली ए बोडो और संथाली लैंग्वेज कितने नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा हितला बोडो और संथाली को परीक्षा रे पढ़ितला वेरी गुड 92 अमेंडमेंट एक्ट रे ओके 92 अमेंडमेंट एक्ट रे एडा हमरा ऐड करा जायतला ओके Okay, 57. Consider the following statement. The term sovereign socialist were added by the preamble, added to the preamble in 42nd Constitutional Amendment Act. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of territory in favor of Indian socialism involved nationalization of all means and production and distribution. कोटा करेक्ट अच्छी हाँ फास्ट भूल अच्छी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तीनटा वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एसएसआई कहउतले ओके सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी ये तीनटा को वर्ड हेतला नॉट सोवरेन सोवरेन नथिला तो एटा हमरो रॉन्ग अछि इंडियन सोशलिज्म जोटा हमें कहूचे सबु जिनस गुडा कोन नेशनलाइज करा कि हमरा प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं कि हमें कहूचे हमरा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म जोठी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर एग्जिस्ट साइड बाय साइड तो एठी केवल हमरा नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मींस एंड प्रोडक्शन में एटा हमरा रॉन्ग अछि तो बीइंग ए सोवरेन स्टेट एटा ठीक अछि हमरो हमें गोटे सोवरेन स्टेट हिसाब रे जो माने इंडिया जोटा को चाहिबो हमर कोन करबो ना नुआ पार्ट गोटे हमर आनी परिबो और हमर कोन करि परिबो सीडेड करि परिबो ओके तेणु सेकंड हमर ठीक अछि जे हमें कहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रे हमें बांग्लादेश को हमर किछि पार्ट दे कि बांग्लादेश रो किछि पार्ट हमें आनिले ओके सीड करिबो कि पार्ट जदी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन जदी दिबो दिरा कंट्री भितरे ताहाले कम पकड़े किंतु जदी तमर गोटे पार्ट को तमर अलग फॉरेन स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहतो तो सेटा एडा कॉन्स्टिट्यूशन नी हाउस माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करि के आनिबे हमें कहिले 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हमें बांग्लादेश को देले किंतु डिसीजन हमें नहीं परिबा ना आज ए सोवरेन स्टेट हिसाब रे हमें डिसीजन नहीं परिबा ना नहीं गोटे पार्ट हमरो को कंट्री को देकी किछि पार्ट हमें आनी परिबा ना नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रो रे ही हबो किंतु एटा हमरो जे आम पाखरे पावर अछि हमें किछि गोटे पार्ट आनी परिबा और किछि गोटे पार्ट देई परिबा जेंति कहली 105 हमरो अमेंड जो कोन 100 जो अमेंडमेंट एक्ट रे हमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जोटा हेतला ओके आउ हमें कहली जो 42nd रे तीनटा वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड हेतला कोडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो how many pair are correctly matched one pair two pair three pair four pair
देखो प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हेतिला ना हे नथिला फ्री लीगल एड टू पुअर 39A ओके एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हेतिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके आर्टिकल 39A ठीक अछि जो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एटा भी ठीक अछि यार्ली चाइल्डहुड केयर एंड हमर जो 0 to 6 ईयर पिलां को यार्ली चाइल्डहुड केयर दिया जिवो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे एटा हमर 45 आर्टिकल नंबर 45 रे अछि एटा भी ठीक अछि ओके to take steps towards secure the participation of the worker in the management of industry a participation of the worker in the management of industry एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आसिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसितला कोठी एटा मेंशन अछि ना 43A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो 43A रे हमें कोन ना जोथरे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एटा 72 हो एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला एटा हमर रॉन्ग अछि तो केतना पेयर हमर ठीक हे गला तीनटा पेयर हमर ठीक हे गला ओके तो प्रथमे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोन ना हमें कहिले इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर जोटा 39A रे ओके सो गोटे ठीक हैला सेकंड हमरा टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एटा 43A रे थिला तेनु हमरा एटा 42nd रे ऐड हेतला नॉट 72 सेति पय हमरा 4 नंबर टा भूल टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड एटा भी 42nd रे हेतला ओके 48 से तापरे 44 रे हमरा कोन ना जो 38 रे टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एटा 44 रे हमरा जोटा कि 38 रे हमरा ऐड करा गला आ गोटे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हमरा यार्ली चाइल्डहुड केयर जोटा हमरा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आसीबो 0 to 6 इयर्स पिलां को 45 रे आ फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पिलां को हमरा 21A फंडामेंटल राइट रे रखा छ ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19 रे कोडा अछि ओके से कोडा हमर कोन करेक्ट होई छी ना ओनली 3 देखो तमे गोटे डिक्लेयर करि परिबो कि राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट माने कोन कहलो स्ट्राइक जो हमरो ओके विदाउट एटा तो एटा हमर रॉन्ग अछि राइट टू ऑफ द आउटसाइडर टू रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया जने आउटसाइडर आसी गोटे ट्राइबल एरिया रे रही परिबो जोडा प्रोटेक्टेड एरिया ट्राइबल एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया यू कैन नॉट एंटर जेमिति कि हमें अंडमान निकोबर रे हमें कहले जो जारुआ ट्राइब की ए सब सेंटिनल माने रहिले यू कैन नॉट एंटर जोडा रेस्ट्रिक्टेड एरिया यू कैन नॉट एंटर राइट अगेंस्ट द इंपोजिशन ऑफ द प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर एटा हमर हमें राइट अगेंस्ट इंपोजिशन हमें गोटे न्यूज़पेपर ऊपर हमर कोन होसी जो बैन करि परिबे नै एटा तांकर राइट्स सो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर तो हमर 6 टा राइट्स जो अछि अंडर आर्टिकल 19 रे कोन हमर अछि 6 टा राइट्स अछि ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोटे तापर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करो जेमति कि पीएमजी रे बसचंदी टीचर माने पीसफुली खाई पी के रात दिन रात पे बसिबो ओके किछि विदाउट एनी आर्म किछि ठीक गंडगोल करिवनी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यस राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैला जोडा प्रोटेक्टेड एरिया तमे सेठी को जीवनी राइट्स टू रिसाइड एंड सेटलमेंट एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी हमें टेरिटरी को भी पार्ट रे घर किणी रही परिबो तुम इच्छा हो जम्मू काश्मीर घर किणिया को घर किणी रही परिबो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन कोनोसी भी जॉब आ प्रैक्टिस करि परिबो आ कोनोसी भी बिजनेस करि परिबो बिजनेस करियो बोली तमे कहबो मु गंजे व्यापार करबी तो सेडा होबनी ओके तो ओडा लीगल बिजनेस तमे करबा निहाती दरकार ओके तो ए जोडा हमर रहिला तो ए जोडा स्ट्राइक रहिला राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट एडा हमर तमर फंडामेंटल राइट रे आसुनी तापरे राइट ऑफ द आउटसाइडर एंड सेटल इन द ट्राइबल एरिया
रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो माने कर मु कहली जे अंडमान निकोबर जो माने सेंटिनल रहले सेडा तमरा आसुनी एंड तो ई जोडा हमरा तमरा जोडा रेस्ट्रिक्शन अछि ओके क्वेश्चन नंबर 60 consider the following statement with reference to fundamental duty in the constitution of India. Fundamental duty are non-justiciable in nature, have no legal sanction against their violation. The enjoyment of fundamental right is conditional upon fulfill of this duty. Okay, এটা তো non-justiciable. Okay, fundamental duty টা non-justiciable. Fundamental duty ଆମର କୋଉଠୁ ଆମେ ଆଣିଛେ fundamental duty? USSR Constitution ରୁ ଆଣିଛେ. Okay, କେତେ नंबर amendment act ରେ এটা ଆସିଥିଲା? 42nd amendment act 1976 ରେ ଆସିବ. केते नंबर पार्ट रे ऐड करा जिबा पार्ट 4A रे केते नंबर आर्टिकल 51 ए को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन एटा हमरा आसीबो ओरिजिनली केतेटा हमरा इथे इंक्लूड कराइतिबो 8टा ओरिजिनली हमरा 8टा रिकमेंड करिथिबे 10टा हमरा हबो आ एक्स्ट्रा ऐड करा हिची केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 86th amendment act 2002 रे कोन ना it is the duty of the parents to send their children to the school okay and these are non justiciable तमे जानि छ सेडा को justiciable नहि okay ठीक अछि हमें कोन करिबा ना नेक्स्ट क्लास 61 रो तमरो रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन करिबा तेन जो माने ओल्ड पिला छ तो सेमानक पई हमर जो माने मेल लिखि छ हां 2 मिनिट ओके जो माने ओल्ड पिला ग्रुप रो छ एमाने को कोन ना डायरेक्टली सेमाने को टेस्ट विथ प्रीलिम रो क्लास होची डायरेक्टली दे कैन कांटेक्ट और सेमानक पई टेस्ट सीरीज और प्रीलिम रो जो क्लास ओनली 5000 भितरे से माने होल क्लास करि परिबे एंड टेस्ट सीरीज करि परिबे ओके सो लेट्स जो माने मेन देई छ डोंट हमें ए प्रोसेस रु बाहर को जाओनी कहीं कि ना इथरे हम बहुत करंट अफेयर्स डिस्कशन करिबा आउ कांसेप्ट उडा रिवीजन हबो कोन कोन करंट न्यूज अछि ताको रिवाइज करिबा सो दैट तुमको इंटरव्यू रे काम दबो एंड तमरा प्रीलिम जो भला डायनामिक टॉपिक पढुची तो वी हैव टू डिटेल रे डिस्कस करिबा निहति दरकार ओके थैंक यू एवरीवन हेलो सर को हाँ सर ये जो मु टेस्ट सीरीज जॉइन करी